Hello students, I am teacher Mrs. Vatul Sabuwala. We'll start today with the third chapter of political science. The third chapter of political science, standard 9, chapter 3, India's defense system. Introduction. Let's revise. In the last chapter, we studied India's foreign policy. Now we have understood that the primary national interest of a country includes defense from foreign aggression and internal unrest and keep the borders safe. For this, every nation creates a defense system at the national level. India has also created such a system. In this chapter, we are going to understand its nature and study the challenges it faces. Students, in the previous chapter, yesterday, we had studied about the foreign policy, and in that we had seen that defense system is very important. The defense and the economy of the country plays a very important role in the foreign policy. So, in this chapter, we are going to study about the defense system. Now we have to defend ourselves from the foreign aggression, foreign powers से, और हमारी कंट्री के अंदर जो अनरेस्ट होता है उसको हमें सेफ रखना, हमारी कंट्री को इन सब से हमें सेफ रखना है और हमारी बॉर्डर्स को भी सेफ रखना है. इसके लिए डिफेंस सिस्टम होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो इसके लिए हम देखेंगे ये चैप्टर में about the defense system, understand its nature and study the challenges which India faces. For this thing, the national security is also very important. What is national security? The international system is made up of sovereign nations. Even if they cooperate with each other, sometimes there are conflicts between these sovereign nations. There are disputes between nations over boundaries, or over sometimes conflict emerge between them over water sharing. Some other reasons for conflicts could be not following the terms of international treaties, constantly competing against each other, the influx of refugees from neighboring countries. Whenever such a conflict of interest arises between nations, it is sought to be resolved by compromising and discussion. But when such efforts are not enough to resolve the conflicts, a nation may even think of war. When a nation attacks another and challenges the sovereignty of the latter, it endangers the security of the nation. Such challenges are created due to the military power of aggressive nations. In many situations, a nation's first duty and responsibility is to keep the security system always well prepared and ready. This is called as national security. Now students, we many a time see, हम कई बार ऐसे देखते हैं कि जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनमें भी कभी कभी लड़ाई हो जाती है. तो तब क्या हो जाता है? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नेशंस. द नेशंस आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं. जैसे आपके फ्रेंड्स, आप आपके फ्रेंड्स के साथ कोऑपरेट करते हैं, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ डिसीजन की वजह से या कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से या किसी न किसी के बिहेवियर की वजह से कभी ना कभी तो कॉन्फ्लिक्ट्स आती ही हैं. आप दोनों के बीच में मनमुटाव होता ही है. सो सिमिलरली दिस इज़ अ कंट्री. सो कंट्री इज ऑल्सो, दो द कंट्री आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई रीजंस की वजह से, शायद या वो बाउंड्री की वजह से हो या वाटर शेयरिंग की वजह से हो, या कभी कभी इंटरनेशनल ट्रीटी कोई एक कंट्री अच्छे से फॉलो नहीं करती, या किसी कंट्री के रेफ्यूजीज़ दूसरे कंट्रीज़ में आ जाते हैं उसकी वजह से. सो देर आर मेनी रीजंस that they may arise some conflict between the countries.
सो दैट इज़ वाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, ये जो प्रॉब्लम्स होती है, उसे हम बैठ के सॉल्व करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, डिस्कशन करते हैं, निगोशिएशंस करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इसमें से अगर कोई कंट्री अग्रेसिव हो जाती है, देन द अदर कंट्री हैज़ टू बी वेरी मच प्रिपेयर। तो हर कंट्री को ये ज़रूरी है कि अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग रखें, वो किसी को हार्म करने के लिए नहीं, लेकिन अपनी कंट्री को सिर्फ डिफेंड करने के लिए, सिर्फ बचाने के लिए अपना मिलिट्री पावर यूज़ करें। Ways to safeguard national security. National security is closely connected with geography because national security is more likely to be endangered by nations who are geographically closer. A nation must assess the threat to its geographical boundaries and the source of that threat. In order to keep this threat at bay, the nation has to increase its military powers, its military mights. The nation has to use modern technology to predict the threat, to build weapon system and modernize and update the defense forces. Resolving conflict by taking recourse to war in order to safeguard national security brings internal peace into danger. Hence, some nations try to get the support of other nations to manage the threat to their national security. Now here what happens students कि national security geography से बहुत ही related है, क्योंकि आपके आजू बाजू में जो neighboring countries होती हैं, they can attack you more faster as compared to that country which is far away from you. So here we are having the threat and the geographical thing plays a very important role in that. Now nation are using modern technology कि हमें किससे डर है, किससे खतरा है, तो हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं और एंड वी बिल्ड द वेपन सिस्टम एंड मॉडर्नाइज एंड अपडेट अवर डिफेंस फोर्सेस. अगर ये कभी कभी ये जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कभी कभी बातों से या विद कॉम्प्रोमाइज़ और विद डिस्कशन और विद टॉक्स सॉल्व नहीं होते, देन फाइनली क्या ये वॉर की शक्ल ले लेता है, इट टर्न्स इनटू अ वॉर. एंड इन ऑर्डर टू सेफगार्ड अवर नेशनल सिक्योरिटी हमें क्या करते हैं कि हमारी जो इंटरनल पीस है हमारी कंट्री की, इट इन डेंजर्स, वो डेंजर में आ जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन्स कि हमें दूसरी नेशंस के भी, दूसरी कंट्रीज़ का भी सपोर्ट लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी. क्योंकि आप अगर सामने वाली कंट्री आपसे पावरफुल है तो जाहिर सी बात है कि आप वीक पड़ जाओगे. दैट इज़ वाई यू टेक द हेल्प ऑफ द अनदर कंट्री. सो इन दिस मैनर what happens that the countries they have treaties between them कि if this person will attack, this country will attack me, then you give me the support, and if anybody will attack you, I will give you the support. So like that way the things are being there. India's security system. India's security system includes the Army, Navy and the Air Force, the three forces that defend the country. The responsibility of protecting the geographical boundary is on the Army, whereas the Navy protects the coastline. The Air Force is in charge of protecting India's airspace. The Ministry of Defence control all the three forces. The Indian Army is very big. It is the world's 7th largest army. The chief is known as the general, the chief of navy is known as the admiral, while the chief of the air force is known as air chief marshal. These three chiefs are appointed by the president. The president of India is the supreme commander of the defense forces. The defense forces cannot take any decision about war of peace without the consent of the president, because the latter represent the civil powers.
In a democracy, civil leadership is considered superior to military leadership. Many measures are taken so that all the three defense forces in India's security system are adequately modernized. For this, some research institutions have been set up. Many training institutions have also been set up in our country to train the personnel of all ranks of our defense forces so that they can perform their tasks competently. For example, the National Defense Academy NDA at Pune and the National Defense College NDA at Delhi, etc. So many things are being. The Prime Minister is the commander of the defense force, and to take more and more people into military. Now the very important thing is, in a democracy, civil leadership is considered superior. Civil leadership ज़्यादा superior माना जाता है as compared to the military leadership. And this is the National Defense College, where here the training for the military is being given to the people. And not only that, we want to modernize हमारा ये जो डिफेंस सिस्टम है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, हम उनको मॉडर्नाइज रखते हैं और हम कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट भी सेटअप किया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग हम दे सके इन इंस्टीट्यूशन में. जैसे नेशनल डिफेंस कॉलेज दैट यू कैन सी ओवर हियर, इट इज़ बीन देयर एट पुणे एंड एट दिल्ली.